बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द TechVerse Lectures। TechVerse सिखा रहा है 100% Python programming from zero to advanced level. Just bring your dedication. Your work is to bring that dedication and let's get started guys. Okay. बिफोर स्टार्टिंग पाइथन प्रोग्रामिंग, हमें पाइथन की प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स तो आइडिया होना चाहिए ना। इसके लिए हमें क्या, व्हाट इज प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग क्या है? सबसे पहले तो प्रोग्रामिंग इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग अ कंप्यूटर अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। प्रोग्रामिंग क्या है? एक प्रोसेस है कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करना। अगर कोई हम कंप्यूटर को कोई टास्क परफॉर्म करना है तो हमने उसको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करनी है। इट कैन डू लाइक दिस. It involves writing code in a language that computers can understand and execute. ठीक है, it involves programming में क्या आएगा? Write करना है कोड को in a language that computers can understand. कंप्यूटर की लैंग्वेज में कोड राइट करना कि जो कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड करे। इंस्ट्रक्शंस किसकी लैंग्वेज में होगी? कंप्यूटर की लैंग्वेज में। लाइक कोई ह्यूमन है, वो फर्स्ट टाइम हम उसको काम असाइन कर रहे हैं, कोई भी टास्क असाइन किया जाता है उसको, तो हम लोग उसको इंस्ट्रक्ट करेंगे शी और ही कैन डू लाइक दिस, इन दिस वे। इन द सेम वे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करना उसकी लैंग्वेज में, इट्स कॉल्ड प्रोग्रामिंग। और कंप्यूटर लैंग्वेजेस, देयर आर डिफरेंट कंप्यूटर लैंग्वेजेस लाइक पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस, सी। हमने जो बेसिक हमारा पर्पस है पाइथन प्रोग्रामिंग, तो हम लोग पाइथन को ही स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चाह रही हूँ कंप्यूटर पे स्क्रीन पे प्रिंट हो, आउटपुट स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड, तो पाइथन में प्रिंट करवाने के लिए मैं उसको पाइथन में प्रिंट ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट और स्ट्रिंग्स में हम लोग उसको प्रिंट करवाएंगे हेलो वर्ल्ड को, स्ट्रिंग प्रिंट करवाएंगे हेलो वर्ल्ड। इसके लिए मैंने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इन्वेंटेड पाइथन? Python was created by Guido van Rossum in 1989 and released in 1991. स्टार्टिंग में ये 1989 में जस्ट इनिशियलाइजेशन हुई इसकी, और बाद में 1991 में प्रॉपर रिलीज हुआ इसका। पाइथन बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। आप रिटन अगर कहीं पाइथन राइट हुई है तो आप इजीली इसको पढ़ के बता सकते हैं कि इस कोड का पर्पस क्या है। Why named Python? Now the question is this, कि पाइथन ही क्यों नाम रखा गया? गुइडो वैन रोजम जो थे, वो ब्रिटिश में ना एक कॉमेडी शो होता था मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस, वहां गए। उन्हीं दिनों जो थे ना, ये इसी प्रोजेक्ट पे, इसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम कर रहे थे, इसीलिए इनको एक यूनिक सा नाम चाहिए था अपने प्रोजेक्ट के लिए। इन्होंने, दैट्स वाई इन्होंने उस शो से इम्प्रेस होते हुए अपनी लैंग्वेज का नाम पाइथन रख दिया। द मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन, आजकल के स्टूडेंट्स का सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल बस ये है, पाइथन क्यों सीखें? पाइथन का यूज़ क्या है? पाइथन जो है सबसे ज़्यादा एडवांस लेवल पे, अगर आप पाइथन का यूज़ ही पूछें तो पाइथन जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में यूज़ हो रही है। एआई, आप जानते हैं एआई तो सबसे आगे है। उसके बाद अगर आप वेब डेवलपमेंट करना चाहते हैं उसके लिए भी आपको पाइथन चाहिए। पाइथन के साथ आप उसका फ्रेमवर्क डीजेंगो, फ्लास्क, डेटा साइंस एंड डेटा एनालिसिस में, ऑटोमेशन एंड स्क्रिप्टिंग के लिए भी हम लोग पाइथन को यूज़ करते हैं। गेम डेवलपमेंट में पाइथन यूज़ हो रही है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये बहुत सिंपल से फीचर्स ऑफ पाइथन है। आप इजी टू लर्न एंड यूज, इजीएस्ट है लर्न करने में और यूज़ करने में। ओपन सोर्स है, फ्री है और क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है। लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी भी है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज मीन हाई लेवल लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। स्पोर्ट्स जीयूआई एंड वेब डेवलपमेंट, और ये वेब डेवलपमेंट को भी सपोर्ट करती है। जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे आपको इन सारी टर्म्स का आइडिया होता जाएगा। इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस मतलब हाई लेवल लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के किस तरह से ऑब्जेक्ट्स को बना के हम लोग इसमें प्रोग्रामिंग करते हैं, क्लासेस बना के क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस करके हम लोग करते हैं। जैसे जैसे आप आगे जाएंगे आपको इनके सारे जो फीचर्स हैं इनको डिफाइन कर दिया जाएगा। After the introduction of Python, now we have to install Python and VS Code. You can open any browser. I am using Chrome browser. You can use any browser. Install python dot org.
everything. Yes. Address browser desk. You can use. You can add your location according to your computer, and then click on install. It's installing. In the same for VS Code. For VS Code installer, install anyway. After downloading VS Code, click on this. I accept the agreement. Next, next, install. It's about installing. As we have already installed the Python, open command prompt, check the version of Python, version, Python 3.14.0. It means Python is installed successfully. Now VS Code is installing. We will wait for this. Then connect Python and the VS Code. Folder, new folder, demo, Python programming. After installing Python, finish. Now open Visual Studio Code to connect with Python. Click here, open folder on the desktop. You can select this. We create already. Select folder. Donut. We will create a new file here. Yes, address authors. Click here to create a new file. demo.py. आप कोई भी फाइल बनाए उसको अपने ऐड करना है .py फाइल से. ये पाइथन की एक्सटेंशन है. यहाँ पे हम लोग लिखते हैं Do you want to install the recommended Python extension from Microsoft? It is asking for extension install. Otherwise, you can also install extensions from here. So extensions here. You can write here Python. Until Python extension is downloading, we will create a demo code like print. We want to print. There are all the Python extensions, and these all three are downloaded automatically by suggestions. Python extensions installing.
like we want to print hello world. The most favorite string of the every developer in the initial stage to print hello world. After the Python extension is downloaded, then we will run this program. Our first simple Python program. Mm, We can also type this print our first Python program. Extension is installed. Now we will close this and this. Now we will open up, go to the file, save all the changes are saved. New terminal. So we will open this and run file in the Python terminal. Right click, no space. Right click and run Python file in the terminal. Find out run Python file in the terminal. Run this file and our first Python program is here in the terminal. It displays in the output. If we want to print anything else like print hello world, hello world, then again right click, run Python in the terminal. Our first program hello world. Again, if we want to find sum of two numbers, print sum 2 plus 3. Then again run Python in the terminal. 2 plus 3 is equals to 2 plus 3. Third statement is 2 plus 3 into 5. Okay. Okay ji. Allah Hafiz guys. We will start again the next video. It's all about introduction, how Python discover, what is Python, what is programming, and how we can connect Python and the VS Code. Then we will, inshallah, we will start tomorrow the next topic. It's all about variables and we will continue with the programs. हम रोज का एक एक काम करेंगे, रोज का एक टॉपिक कवर करेंगे और उसके साथ साथ एक प्रोग्राम भी इंशाल्लाह डिस्कस किया करेंगे. हाउ प्रोग्रामिंग, हाउ लॉजिक फॉर्म्ड, कि हम किस तरह से लॉजिक बना रहे हैं इसमें. ओके, अल्लाह हाफिज गाइस, मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ.